You all, I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 29th of May. Session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end, students. In this video, students, we will be talking about Rajnath Singh, our defense minister, has approved the execution model for AMCA program. Then we will be talking about Prime Minister Narendra Modi's visit to Gujarat. Next thing we will be talking about is innovate to transform, right? This has been recently unveiled as a theme for the 9th edition of the IMC, India Mobile Congress. Then MOR, they have recently approved new train service between Agartala and Guwahati. All these things and many more will be discussed, so stay tuned with us till the end, students. If you are new here, students, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Also, the daily current affairs video, students, is scheduled for 5 a.m. in the morning on daily basis, so do watch these videos. These are quite important for competitive exams. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Start with national affairs, students. Rajnath Singh, our defense minister, has approved the execution model for AMCA program. AMCA is your Advanced Medium Combat Aircraft program. The effort here is to enhance the defense capabilities and foster a better aerospace industrial ecosystem where our products are of high quantity or our products are of high quality, right? They are equipped with better technology, updated technology, and so on. Correct. Here you can see Rajnath Singh, our defense minister, has approved the execution model for the Advanced Medium Combat Aircraft program, and this will enhance the indigenous defense capabilities, foster a robust domestic aerospace industrial ecosystem. This will be implemented by ADA, that is Aeronautical Development Agency, DRDO, in collaboration with various industry partners. You will be seeing various joint ventures also coming up here, right? Next, and this AMCA, this is India's 5th generation stealth fighter aircraft program. Next is, you can see in the picture, Prime Minister Narendra Modi. He was on a visit to Gujarat from 26th to 27th of May, and during his visit he laid the foundation stone for various development projects that include your railways, power, urban infrastructure development, education, manufacturing, right? All these things will be, or for projects for these has been launched. Apart from this, you can see PM Modi inaugurated and dedicated new locomotive manufacturing plant established by Indian Railways and flagged off a 9,000 horsepower electric locomotive for domestic purpose and export in Lahore. Then he also flagged off Sabarmati. He flagged off Sabarmati Verawal Vande Bharat Express. This will be a 438 miles train, and it will be taking 10 hours for this journey. Correct? Take a note of this. If we talk about Gujarat state, who is the chief minister of Gujarat? Bhupendra Patel. And who is the governor here? Acharya Devrat. Capital is Gandhinagar. Gandhinagar. Next is Union Minister Jyotiraditya Scindia has unveiled, that is innovate to transform, as the theme for the 9th edition of the IMC, that is India Mobile Congress. What is this India Mobile Congress? First of all, you should know. India Mobile Congress, it was organized by the Department of Telecommunication under the Ministry of Communication, right? And this forum, it is projected to attract 1.5 lakh visitors from across 150 countries, correct? And this India Mobile Congress, correct? This basically what happens here is that you will be seeing communication will be enhanced, right? Various startups, various industry partners, various exhibitors, international delegates, all they will be taking part here, right? So Jyotiraditya Scindia has unveiled this innovate to transform as the theme for the 9th edition of the India Mobile
Congress. And this India Mobile Congress, it plays an important role in fostering innovation, right? It helps us to grow, partner with different industry partners, right? And also help us to innovate and do research and development in various sectors, specifically in technology sector. Correct. So here you can see Jyotiraditya Scindia ji, right? He's our Union Minister of Communication. Correct. He has unveiled this Innovate to Transform, and this Innovate to Transform, this is the theme here for the 9th edition of the India Mobile Congress that is scheduled to be held from 8th to 11th of October. It will be held at the Yashobhumi Convention Center that is located in New Delhi next to Dwarka Expressway Road. Correct. Apart from this, Union Minister Jyotiraditya Scindia has also revamped the student volunteers led Sanchar Mitra scheme that is specifically designed to mobilize the power of India's Yuva Shakti, that is student volunteers, to become informed ambassadors of telecom awareness, cyber security and digital empowerment. Next, if we talk about, we have seen this and here remember Aspire, right? This is a flagship startup program of the government of India that was introduced in 2023 that will showcase over 500 startups and connect them with 300 investors, incubators, accelerators, VCs for mentorship and funding. Next is Ministry of Railways has approved a new train service between Agartala and Guwahati. Directly take a note of this. This train will originate from Agartala and halt at Narangi, located in the outskirts of Guwahati. Right? Agartala is in Tripura and Guwahati is in Assam. They are the respective capitals of the country, of these states. Next is Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. They have approved 2 new crop varieties from PD Kiwi. What is PD Kiwi? It is Punjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth, right? So Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, they have approved 3 new high yielding crop varieties and expanded the cultivation areas for 3 existing ones developed by Akola Maharashtra based Dr. Punjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth. The aim here is to enhance agriculture productivity and sustainability across India. These 3 new varieties, which are these: AKAW 5100 wheat, CSV 65 yellow sorghum kharif, and Super Jhaki chickpea, that is AKG 1402. So take a note of these. You should know about them, right? This AKAW, this is wheat. This is kharif, that is sorghum, right? And here this is last is chickpea. So these are the 3 varieties that has been launched here. Moving on. Next is international affairs. ILO NASK report. ILO is your International Labour Organization. NASK, it is Poland based. NASK is your National Research Institute, right? So they have partnered, these 2 organizations, they have released a report that stated that 1 in 4 jobs at a risk of being transformed by generative AI. We have been discussing this also, students, for a very long time, that with the rise of artificial intelligence, many jobs will be lost because they will become automated. These will be done by the agents, so-called agents that AI will be running, right? And one of the major impact that we will be seeing here is on the IT sector. We are seeing that Microsoft has also laid out so many employees recently. Almost 6,000 employees, that is the 3% of their workforce, were laid off. Then IBM recently laid off almost 8,000 employees, and among them the major ones were HR and IT employees that were laid off. Correct. So if we talk about this report, it is Switzerland based ILO. They have released this report, and as per the report, 1 in 4, that is almost 25% of the jobs across the world are at the risk of being transformed by generative AI. The report further showed that 34% of the jobs in occupations exposed generative AI are high income countries compared to 11% in the low income countries. Also, the report provides a comprehensive overview of how AI could transform the occupation and employment worldwide by combining approximately 30,000 occupational tasks with expert validation, AI assisted scoring, and ILO harmonized micro data. Also, the report revealed that the exposure among the women remains slightly higher than that of men at 4.47% of the women jobs worldwide fall into the high risk category compared to 2.4% of such jobs among men. If we talk about ILO, who is the Director General of ILO? Gilbert Huangbo, headquartered in Geneva, Switzerland, established in 1919. Next is banking and finance. Life insurance sector in India grow at 10.5% against the global average of 5%. I repeat,
the life insurance market in India surged by 10.5% annually, right? This is a significant growth compared to that of a global average of 5% as per the data released by the Alliance Group Insurance Report 2025 released by Alliance Global Insurance, right? If we look at this, the Indian market, it is poised to become the second largest in Asia, surpassing Japan, as India's life insurance sector is set to grow at a CAGR of 10.5% over the next decade. Also, China is followed by North America and Europe, but India is likely to grow at a much faster rate than that of China also. Moving on to economy and business students. Pet food brand Drools became India's fourth unicorn of 2025. What is a unicorn? When a market cap of a company crosses $1 billion. So, Drools, right, that is a pet food brand. They became the fourth unicorn of India. Very important, right? And Drools Pet Food, it has emerged the India's first pet food brand to achieve this unicorn status and fourth Indian startup. The headquarter of this, where is the headquarter of this brand? It is in Chhattisgarh. Next is India recorded at $81.04 billion FDI inflow in FY25, right? So as per the data recently released by Ministry of Commerce and Industry, right, they reported that our country, India, recorded a provisional FDI inflow of $81.04 billion in FY25, right? This is a 14% increase as compared to $71.28 billion that we received in FY24. Correct? Also remember, the service sector here emerged as the top recipient of FDI, attracting 90% of the total inflows, followed by computer software and hardware at 16%, trading at 8%. And Maharashtra accounted for the highest share, that is 39% of the FDI inflows, followed by Karnataka 13% and Delhi 12%. And in source countries, Singapore led with the 30% share, followed by Mauritius 17, USA 11. Correct? Next is awards and recognition. Ministry of Petroleum, Ministry of Personal Public Grievances and Pensioners, right? They have announced NAEG 2025 recognizing 19 initiatives across India. What is this NAEG? NAEG is your National Award for E-Governance, right? This award is given to honor and encourage the outstanding achievements for the implementation of the e-governance initiatives across India. Correct? So it is Ministry of Personal Public Grievances and Pensioners. They have announced these awards. Correct? These are the 22nd edition of these awards. These awards will be presented during the 28th National Conference of E-Governance that is scheduled to be held in Visakhapatnam, Andhra Pradesh from 9th to 10th of June. Correct? And take a note of this. Here you will be seeing a total of 19 initiatives were recognized under these awards, comprising 10 gold, 6 silver and 3 jury awards. Also, this NAEG 25 include a trophy, certification and a monetary incentive of 10 lakh rupees for gold awardees, 5 lakh for silver awardees. Right? Next is Adil Sumirwala, right, has been honored with the Asian Athletics Leadership Gold Pin in South Korea. I repeat, Dr. Adil J. Sumirwala, the Vice President of the World Athletics and former President of the Athletic Federation of India, was conferred with the Asian Athletics Leadership Gold Pin by the Asian Athletic Association during the Congress that was held in Gyeonggi, South Korea. Right? Take a note of this. Here, if we look at some of the winners here, right, or if we look at the Adil Sumirwala, right, his achievement, he represented our country India in 100-meter sprint in 1980 Moscow Olympics, right? Then he had various administrative roles also, and also remember he was honored with Arjuna Award in 1985. Next is appointments and resignation. Independent candidate Nicusar Daun has been sworn in as the new president of Romania. So who has been appointed as the new president of Romania? As you can see here in the picture, Nicusar Daun. Correct? And he has been sworn in as the 7th president of Romania. He will be replacing ILE Bolojan. Right? Next.
Dr. Samir V. Kamath has get the second extension as the chairman of DRDO and secretary as the secretary of DDR&D. Right? This DDR&D, this is your New Delhi based Department of Defense Research and Development. Correct? Take a note of this. So ACC has appointed or extended. This is the second 1 year extension given to Dr. Samir V. Kamath, who is the Secretary of Department of Defense Research and Development and the Chairman of DRDO. His term will be ending now on 31st of May 2026. Next is Citigroup appoints Prashant Thakur as the head of the corporate bank for South and Southeast Asia. So take a note of this. This Citigroup, this is New York, USA based, a multinational investment bank and financial service corporation, and has appointed Prashant Thakur as the head of the corporate bank for South and Southeast Asia effectively. Moving on, next is science and technology. Intellisat has received in-space approval to offer direct satellite broadcast services in India. This USA-based Intellisat, right? This is the multinational satellite service provider, and they have received an approval from Ahmedabad, Gujarat-based in-space to provide direct satellite coverage to media organizations in India. Right? With this authorization, Intellisat has secured a contract with 3 of India's largest media companies for the regional footprint. Also, the approved satellite fleet will primarily serve the dynamic broadcast media industry of India, specifically to the media houses. The data directly from the satellite will be provided here. Right? The satellite network with 4 satellites covering the region will provide Indian broadcasters with reliable, high quality connectivity solutions that meet their evolving need. Moving on to environment. New cave adapted fish species, that is Cichustra densilva, discovered in Meghalaya. I repeat, this is the new cave dwelling fish that has been named Chitura densilclava, right? It has been recently discovered in the East Khasi Hills district of Meghalaya. Next is related to sports students. India has topped the medal tally at the ISSF Junior World Cup 2025 in Suhul with 11 medals. So India secured the top position, right, in the medal tally with 11 medals. Correct. In this, 3 are gold, 4 are silver, and 4 are bronze. Correct. So here you can see this event witnessed the participation from 638 shooters representing 59 countries, when with India has the largest number of teams, that is with 57 shooters. Correct. Take a note of this. And here you can see Tejaswani Sawant representing India secured gold in women's 25 meter. Then Kanak Budwara won gold in the women's 10 meter air pistol, and so on. Apart from this, India in first position in medal tally, China second, and Italy third. Next is books and authors. Test Cricket, A History. This is the book by Tim Wigmore, right? And this is for 150 years of his Test cricket, right? Of this Test cricket industry that we are seeing in the cricket, right? So to talk about the history of the Test cricket, here this book has been launched. This book is talking about the highlights of the Test cricket, both on the field and its broader social impact that we see because of this, right? Next is important day, students. World Hunger Day observed on 28th of May. This day is to raise awareness about the millions of people that lack access to proper food. There is a theme also, that is showing resilience. This is the theme here. Correct. Take a note of this. And first time this day was observed in 2011. Then next is International Day of Action for Women's Health observed on 28th of May. This day is to raise awareness about women's health, right? That their women should be taken care of. They should take care of their health. There is a theme also here, that is in solidarity we resist, our fight, our right. I repeat, in solidarity we resist, our fight, our right. This is the theme here. Correct. Next is World Menstrual Hygiene Day observed on 28th of May. This day is to raise awareness about the menstrual health and equity, right? And also challenges, and also addressing the challenges that are faced by the women during puberty, right? Or during period, correct? Not puberty, during period times, right? And there is a theme for this, that is Together for a Period Friendly World. I repeat, Together for a #period friendly
world. This is the theme here that you need to remember. Then next is state news. AP, that is Andhra Pradesh government, renamed YSR district as YSR Kadapa district. I repeat, Andhra Pradesh government, right? They have recently renamed the YSR district as the YSR Kadapa district, right? Take a note of this. This can be directly asked. So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part that will be beneficial for your learning. What is the new ceiling on the guarantee cover per borrower under the expanded credit guarantee scheme for startups as notified by DPIIT in May 2025? So it is 20 crore rupees. Next, mention the company in India that recently became the world's first renewable energy independent power producer to turn water positive with 14 gigawatt of operational portfolio. It is Adani Green Energy Limited. Next, in April, the International Thermonuclear Experimental Reactor, the world's largest nuclear fusion project located in the southern France, has achieved a major milestone in the development of its main magnet system, with India playing a key role in building crucial infrastructure to confine superhot plasma particles that combine and fuse to release energy. Question asked here is identify the country from the list of the following that is not involved in this ITER project. So among the following, it is France that is not included here. Rest all countries are a part of this ITER project. Next, in 25, the Cardinal Robert Francis Prevost was elected as the 267th Pope of the Catholic Church, succeeding Pope Francis, who recently passed away. Question asked is to which country does Prevost belong? He belongs to USA, and he is the first individual from USA to be appointed as the Pope here. Next, in May, which Indian Defence Public Sector undertaking delivered Arnala, the first of 8 indigenously developed anti-submarine warfare shallow watercrafts to the Indian Navy in Kattupalli, Tamil Nadu? So, which Indian Defence PSU it is? It is Garden Ridge Shipbuilders and Engineers Limited. Next, who led the Indian delegation at the 20th session of the United Nations Forum on Forest held in May 2025 in New York, USA? It is Sushil Kumar Avasthi. Next, which of the following social security schemes completed 10 years since their launch in May 25, having been introduced by Prime Minister Narendra Modi on 9th of May? So, which of the following social security schemes are we are talking about? We are talking about Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Atal Pension Yojana, and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana. So, all three of them. Next, in May, a study prepared by the Department of Wildlife Protection in Ladakh in collaboration with Dash and the National Tiger Conservation Authority concluded that Ladakh has the world's highest snow leopard population density. So, it is Department of Wildlife Protection in Ladakh in collaboration with Wildlife Institute of India and the National Tiger Conservation Authority concluded that Ladakh has the world's highest snow leopard population density. That is 477 snow leopards in Ladakh. Next, which country introduced the world's first national cryptocurrency tourism payment system in May through collaboration with Binance Pay and DK Bank? This is the first digital bank of Bhutan that partnered with Binance Pay in order to introduce cryptocurrency in the tourism sector. Next, after Netradian and JustPay, which company became the third unicorn of India of 2025, raising $200 million in a Series F funding round? This is the F is the 6th series funding here. Right, so which is that company we are talking about? We are talking about we are talking about Porter. This is a delivery platform. You can send goods from one location to another location. Next, the government of Dash and the Indian National Space Promotion and Authorization Center, they signed 2 MOUs focused on establishing Center of Excellence for Space Technologies and Public-Private Space Manufacturing Park. So the government of Karnataka and in space, that is Indian National Space Promotion and Authorization Center, they have signed this MOU here, correct? And this Center of Excellence is for Space Technologies that will be established in Bengaluru, Karnataka. Next, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, that is SMBC, they entered into a definitive agreement to buy how much % stake in Yes Bank Limited, valued at 13,483 crore rupees. It is 20%. Next, Virat Kohli has announced his retirement from Test cricket, bringing to an end of 14-year career in the longest format of the game with immediate effect. Question asked is, what is India's Test win percentage under Kohli's captaincy? It is 58.82%.
Next, World Migratory Bird Day is a global campaign supported by the United Nations, observed biannually on the second dash of May and October. It is biannually observed on the second Saturday of the month of May as well as on October. So it is observed twice in a year. This year it is on 10th of May and 11th of October. Next, National Technology Day observed by the Technology Development Board on 11th of May every year. This day marks the historic achievement of 11th of May of 1998 when India conducted Operation Shakti, that was Pokhran 2 nuclear test and the maiden flight of the indigenous Hansa 3 aircraft. Right, so when do we observe this National Technology Day? 11th of May, and this year it was the 27th edition of this day. Next, which is the third highest peak in the world? It is Kanchenjunga. Right, third highest peak in the world. It is 8,586 meters in height. Next, where did Union Minister Rajnath Singh, our Defence Minister, virtually inaugurated BrahMos Aerospace Integration and Testing Facility in May 2025 to strengthen India's efforts to become self-reliant in defence production? It is Lucknow, UP. Next, the dash topped among the developed and emerging economies in terms of both manufacturing and service activities as per the latest PMI Purchasing Managers Index report released in April, that was released by JP Morgan. So who topped here? That our country India topped among the developed and emerging economies in terms of both manufacturing and service activity as per the data released by PMI Purchasing Managers Index. Next, mention the name of the bank becoming the first from the Middle East and Africa region to open their branch in Egypt, IFSC. So, which is that bank we are talking about? Qatar National Bank Group. Next is the Water Heritage Museum, that is operated by the Center for Water Resources Development and Management. It is situated where has been included in the list of the Global Network for Water Museum, that is a flagship initiative under UNESCO's Intergovernmental Hydrological Program in May. So where is it located? The location is being asked for this Water Heritage Museum. It is located in Kozhikode, Kerala. Next, remember this is the third monument or heritage site that has been added to this list. Right, first was Jal Water Museum located in Udaipur, then Living Water Museum located in Pune, Maharashtra. Next is Dash and Dash won the respective men's and women's 2025 Asian Blitz Chess Championship held at Al Ain, UAE in May 2025. So, Ivan Zemlensky and Alua Nurman, they have won the men's and women's 2025 Asian Blitz Chess Championships respectively. Next, Subhana Ayappan, a renowned Indian aquaculture scientist and the first non-crop specialist to lead which organization, passed away in May 2025. So, Subhana Ayappan, correct, a renowned Indian aquaculture scientist and the first non-crop specialist to lead which organization, passed away. So, she led which organization? This is your homework, right? Tell me in the comment section. Next, which of the following companies partnered with Lanka Pay to enhance Sri Lanka's digital payment infrastructure, including co-branded debit cards and AI-powered fraud detection? So, name that company. Which is that company? It is MasterCard. Next, mention the game that was officially suspended by Taliban in May due to concerns over gambling and religious alignments with Islamic principles. It is chess game that was officially suspended by Taliban. Next, which of the following state is not among the top 5 Indian states with the highest GST collection for FY25 as per the data released in April 2025? It is West Bengal state is not among the top 5 Indian states here. On the top it is Maharashtra, then Karnataka, then Gujarat, then Tamil Nadu, and then it is UP. Next, mention the first Indian city declared beggar-free in May 25 following an anti-begging campaign launched in Feb that was recognized as the model project by Ministry of Social Justice and Empowerment and the World Bank. So, mention the first Indian city declared beggar-free. It is Indore, Madhya Pradesh.
Next, identify the first American university approved by India's University Grants Commission UGC to establish an independent degree granting campus in Mumbai, Maharashtra. So identify that first Indian university. It is Illinois Institute of Technology. Next, according to the Global Report on Internal Displacements 2025, that is GRID report by International Displacement Monitoring Center and Norwegian Refugee Council in May, what was the total number of internal displacements reported in India in 2025? In 2024. So 5.4 million individuals were displaced internally because of various factors. Next, and in this it is Sudan here, remember students, that secured the top position with 11.6 million internally displaced persons. Next, mention the public sector bank that became one of the world's most profitable companies in FY25 with a net profit of $9.2 billion. So which is it? It is State Bank of India. Next, in May, B2B, that is business to business e-commerce platform, secured approximately 40 million in a funding round, achieving a valuation of $1 billion and entering India's unicorn club. Which is it? We are talking about GSW One Platform Limited. Next is identify the person appointed as the chairman of BRICS to strengthen ties among the BRICS nation. So who has been appointed here as the chairman of the BRICS Chamber of Commerce and Industry? So Harvansh P. Chawla has been appointed here, right? A renowned senior corporate legal expert was appointed as the chairman here. Next, Santosh Kumar Sarangi was given additional charge as the chairman and managing director of which company? Of Solar Energy Corporation of India, succeeding Rameshwar Prasad Gupta. Next, in May, who was appointed as the president of Melbourne Cricket Club, London, England, succeeding Lord King of Lothbury? So, Edward Thomas Smith, right, was appointed as the president of the Melbourne Cricket Club. Next, every year, when is the Global Round Safety Week organized by the World Health Organization to raise awareness about the road safety and advocate for measures to reduce road traffic deaths and injuries? It is from 12th to 18th of May. Next, and this is the 8th edition of this was observed. Next, India's retail inflation based on the CPI fell to dash in April 2025. It fell to 3.16% as per the report released by NSO, that is your National Statistical Office, under Ministry of Statistics and Program Implementation. Next is according to official data released by Ministry of Port, Shipping and Waterways in May, 12 major ports of India registered a 4.3% increase in cargo handling from 819 million tons in FY24 to approximately 855 million tons in FY25. Next, in May, Union Cabinet approved a joint venture between which Indian company and Taiwanese electronic company Hon High Precision Industry Limited, that is Foxconn, to set up the first ever semiconductor chip unit near Jewar Airport in UP. It is HCL Group. Next is in May, where did Union Minister of State Dr. Jitendra Singh dedicated India's first of its kind public funded Department of Science and Technology ICGEB Biofoundry during the 31st board meeting of the governors? So location is being asked, it is New Delhi. Next, India's first manned deep ocean mission Samudriyaan will be launched by 2026 as announced by the Ministry of Earth Sciences. The mission will use the manned submersible vehicle Matsya to reach the depth of dash under the sea with 3 scientists. So it is Matsya 6000, right? And the name of the vehicle is also Matsya 6000, and it is targeted to reach 6000 meter deep, that is 6 kilometer under the sea, with 3 scientists for various experiments. Next, mention the name of the specialized suite of current and saving accounts launched by Canara Bank in May to cater to institutional clients including healthcare, education and religious organizations. So mention the name of that specialized suite of current account and saving account. Take a note of it. Right option is Canara True Edge. Next, SIDBI, they have released a report titled Understanding the Indian MSME Sector, Progress and Challenges about MSME Sector based on the survey of 2097 MSMEs across 19 sectors in manufacturing, services and trading.
Question asked is, according to the report, MSME contribution to India's total export has steadily grown, reaching 43.59% in FY23, 45.73% in FY24, and 45.79% in FY25. Next, identify the financial institute that extended 1910 crore funding to Uttarakhand in May for urban infrastructure development under Uttarakhand Urban Sector Development Agency. It is European Investment Bank, that is EIB. To the homework section, students. First question is, tell me India's first glass bridge. Where is it located? Second question, tell me recently, if I ask you, who has been appointed as the new Chief Executive Officer of UIDAI and who he will be replacing? Third question, who has been appointed as the new Chief Executive Officer of ITI Fund Manager or for ITI Mutual Fund? Fourth question, tell me recently who was honored with the US Presidential Medal of Freedom. I repeat, who was honored with the US Presidential Medal of Freedom. And fifth question, tell me recently SpaceX. This is the mission of which country? What is this mission? Tell me that in detail. So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. And students, all those students who haven't subscribed to us, do subscribe right now. एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 29 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एएमसीए प्रोग्राम के बारे में, जो कि राजनाथ सिंह के द्वारा अप्रूव किया गया। देन हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी विजिट पे थे गुजरात को में। देन हम बात करेंगे इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, ये थीम रहेगी 9वें एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस की, जो भी हमें देखने को मिलेगा। कहाँ पर होगा? यशोभूमि में होगा, न्यू दिल्ली में। देन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने अभी नई ट्रेन सर्विस लॉन्च करी है अगरतला एंड गुवाहाटी के बीच में, इसको डिस्कस करेंगे। ऑल दीज न्यूज़ एंड मैनी मोर आज की वीडियो में रहेगी स्टूडेंट्स, तो एंड तक बने रहिएगा। हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं स्टूडेंट्स, ये वीडियोस जरूर देखा करो। एंड अगर आप नए जुड़े हमारे साथ और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सभी के साथ, एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर से। राजनाथ सिंह, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, राइट, इन्होंने एग्जीक्यूशन मॉडल लॉन्च किया है फॉर एएमसीए प्रोग्राम। एएमसीए क्या है? एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जिससे हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं, राइट, उनको हम एडवांस बना सकें, उनको अपडेट कर सकें, न्यू टेक्नोलॉजीज आ सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम हो सके, इनोवेशन के ऊपर काम हो सके, इंडस्ट्री लीडर्स, बिजनेसमैन, स्टार्टअप ओनर्स, राइट, जो गवर्नमेंट में ऑफिशियल्स हैं, वो सारे मिलके यहाँ पे साथ में आ सके एंड काम कर सके, एंड आने वाले टाइम में जो इंडिया का जो एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम है उसको और बेटर कर सकें, एआई असिस्टेड सिस्टम्स भी यहाँ पे लाए जा सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये अभी गुजरात के विजिट पे थे फ्रॉम 26 टू 27 ऑफ में, 2 दिन के विजिट पे थे। इन्होंने यहाँ पे कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, जैसे रेलवे से लेके अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, देन हाउसिंग से रिलेटेड एंड मैनी मोर, राइट, एंड पावर भी याद रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखें तो इन्होंने न्यू लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इस्टेब्लिश किया, राइट, जो कि इंडियन एयरवेज के द्वारा, इंडियन रेलवेज के द्वारा बनाया गया। देन इसी के अलावा इन्होंने साबरमती जो कि अहमदाबाद में है, टू वेरावल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लॉन्च किया। 438 माइल्स का ये सफ़र पूरा करेगी, 7 घंटे ये लगाएगी अप्रॉक्सीमेटली, करेक्ट। देन अगर मैं बात करूँ गुजरात की, तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे? भूपेंद्र पटेल जी। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर रहेंगे, राइट। गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, ये दोनों यहाँ पे नेशनल पार्क है। फिर आ जाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। इन्होंने इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, ये थीम है आपके 9वें एडिशन ऑफ आईएमसी की, जो कि लॉन्च किया गया। ये 9वां एडिशन ऑफ आईएमसी ये कहाँ पर होगा? यशोभूमि में हमें देखने को मिलेगा, इन न्यू दिल्ली। टेक अ नोट ऑफ दिस, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर 8 से लेके 11 अक्टूबर तक हमें ये 9वां आईएमसी देखने को मिलेगा, इंडिया
मोबाइल कांग्रेस। यहाँ पे आपका बेसिकली इंडिया का पावर सेक्टर को ग्रो करने के लिए, राइट, इनोवेशन लाने के लिए, टेलीकॉम सेक्टर में इनोवेशन लाने के लिए, स्किलिंग लाने के लिए, राइट, मैन्युफैक्चरिंग को बेटर करने के लिए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट को और फास्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। आईएमसी इंडिया मोबाइल कांग्रेस डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसी के अंदर ये ध्यान देंगे कि यूनियन मिनिस्टर के द्वारा ही यहाँ पे एक संचार मित्रा स्कीम को भी लॉन्च किया गया, जो कि रिवैम्प्ड स्टूडेंट वॉलंटियर्स इनिशिएटिव है, राइट। देन यहीं पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से भी बच्चों को सम्मानित करने का काम किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने अप्रूव किया नया ट्रेन सर्विस अगरतला एंड गुवाहाटी के बीच, अगरतला त्रिपुरा में एंड गुवाहाटी असम में, राइट, ये इनकी कैपिटल है। इनके बीच यहाँ पे ये ट्रेन सर्विस लॉन्च करने का काम किया जाएगा। फिर आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इन्होंने 3 नई क्रॉप वैरायटीज लॉन्च करी फ्रॉम पीडीकेवी क्या है, डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ के थ्रू। कौन कौन सी वैरायटीज हैं? एक है वीट की, एक है सोरगम खरीफ की एंड दूसरी है चिकपी की। तो AK AW5100, CSV 65 येलो सोरगम एंड सुपर जाकी चिकपी AK1402, ये 3 वैरायटी हैं जो कि अभी नई क्रॉप वैरायटीज यहाँ पे लॉन्च की गई। फिर इसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड NAS की, जो कि है पोलैंड की नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन दोनों के द्वारा यहाँ पे एक रिपोर्ट रिलीज की गई, जो रिपोर्ट बताती है अबाउट द जनरेटिव AI एंड जॉब्स। मतलब अब जब हम जानते हैं AI आ गया है एंड फ्यूचर में कह रहे हैं जनरेटिव AI आ जाएगा। जनरेटिव AI और एडवांस वर्जन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, राइट। तो इससे हमारा जो जॉब लॉसेज हैं, राइट, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। अभी भी आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा काफ़ी सारी जॉब्स रिलीज की गई। 3% वर्कफोर्स का, जो कि ऑलमोस्ट 6000 इंडिविजुअल्स थे, उनको ले ऑफ किया गया। एंड सबसे ज़्यादा ले ऑफ हमें IT सेक्टर में देखने को मिल रहे हैं, राइट, एंड HR सेक्टर में इसके बाद एंड सो ऑन। जॉब्स ऑटोमेट होती हुई दिखेंगी फ्यूचर में हमें स्टूडेंट्स। एंड हम ये काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि IT सेक्टर में जो जॉब मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। एंड आने वाले टाइम में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जॉब लॉसेज हमें इस सेक्टर में देखने को मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ द राइज इन AI। एजेंट्स आ जाएंगे, तो जो भी कोडिंग का काम है, जो भी डाटा एनालिसिस का काम है, राइट, एक सिंगल प्रॉम्प्ट के थ्रू आपको सारा मिलता हुआ दिखेगा, राइट। आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अभी जो 10 लोग काम कर रहे हैं, इन एजेंट्स की मदद से आप देखेंगे 1 या 2 एजेंट्स ही इन 10 लोगों का काम इजीली कैरी आउट कर सकेगा, ज़्यादा बड़े स्केल पे कर पाएगा, विदाउट एनी रेस्ट कर पाएगा, एंड ईजिली वो जॉब आपको होती हुई दिखेगी। ये डाटा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया। डायरेक्टर जनरल रहेंगे गिलबर्ट हुआंगबो। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 187 मेंबर नेशंस हैं एंड 1919 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस। देखें स्टूडेंट्स, तो LIC सेक्टर इन इंडिया इट ग्रो एट 10.5% अगेंस्ट द ग्लोबल एवरेज ऑफ 5% एंड CAGR 10.5 की CAGR से यहाँ पे आने वाले डेकेड में भी हमें ग्रो होता हुआ दिखेगा, ऐसा ये बताया जा रहा है। इंडिया में जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है एंड इंडिया का टारगेट है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 का भी। इवन हम चाइना को भी पीछे छोड़ते हुए दिखेंगे इस इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की ग्रोथ में। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस पे। हम बात कर रहे हैं इंडिया के 4th यूनिकॉर्न की। यूनिकॉर्न क्या होता है? जब किसी भी कंपनी की मार्केट कैप $1 बिलियन टच कर जाती है। तो इंडिया का पेट फूड ब्रांड रूल्स, राइट, ये पेट फूड प्रोवाइड कराता है आपके पेट्स के लिए, करेक्ट। तो ये इंडिया का 4th यूनिकॉर्न बन गया इन 2025 विद अ मार्केट कैप ऑफ $1 बिलियन। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है इंडिया ने रिकॉर्ड किया 81.04 बिलियन का FDI इनफ्लो इन FY25। ये डाटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया। 81.04 बिलियन डॉलर का इनफ्लो देखने को मिला है हमें FY25 में। एज कम्पेयर टू अगर मैं लास्ट ईयर देखूं उससे 14% का ये ग्रोथ है। लास्ट ईयर 71.28 बिलियन डॉलर का हमें इनफ्लो देखने को मिला था इन FY24। सबसे ज़्यादा इनफ्लो अगर हम देखें सर्विस सेक्टर में देखने को मिला विद 19% ऑफ द टोटल इनफ्लो। देन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सोलर एंड ट्रेडिंग 8। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा FDI देखने को मिला 39% का, फॉलोड बाय कर्नाटका 13% एंड दिल्ली 12%। एंड सिंगापुर से सबसे ज़्यादा देखने को मिला हमें कि सिंगापुर से सबसे ज़्यादा FDI इंडिया में आया 30% तक का, फॉलोड बाय मॉरिशस 17% एंड USA 11%। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकग्निशन पे। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ
पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशनर्स, इन्होंने अनाउंस किए नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस, राइट। ई गवर्नेंस के ऊपर ये काम किया गया जिन्होंने, एंड जो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव को बढ़ावा दिया गया है इंडिया में, उनको ऑनर करने के लिए, उन इंस्टीट्यूट्स को, इंडिविजुअल्स को ऑनर करने के लिए यहाँ पे ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था इन अवार्ड्स का, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड। एंड इस बार हमने 22वां एडिशन इसका ऑब्जर्व किया। 28वें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ई गवर्नेंस के दौरान ये अवार्ड्स को प्रेजेंट किया जाएगा, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलेगी 9 से लेके 10 जून तक। 19 इनिशिएटिव्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जिसमें से 10 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 3 जूरी अवार्ड्स रहेंगे। चलिए नेक्स्ट, आदिल सुमीरवाला, इनको ऑनर किया गया एशियन एथलेटिक लीडरशिप गोल्ड पिन से इन साउथ कोरिया। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मार्क करके चलेंगे, किनको अभी सम्मानित किया गया एशियन एथलेटिक लीडरशिप गोल्ड पिन से इन साउथ कोरिया? तो आदिल सुमीरवाला, राइट। ये वाइस प्रेसिडेंट है वर्ल्ड एथलेटिक्स के एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्प्रिंट इनका इवेंट था, 100 मीटर स्प्रिंट में 1980 मॉस्को में इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी सेट किया था। इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है 1985 में। देन आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे। स्टूडेंट्स आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट निकुसोर डैन, इनको स्वॉन इन किया गया है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ रोमेनिया का। रोमेनिया के ये नए प्रेसिडेंट यहाँ पर बनते हुए दिखे हैं। फिर आ जाते हैं डॉक्टर समीर वी कामत, इनको एसीसी के द्वारा 1 साल का और एक्सटेंशन मिल गया है, ये इनका सेकेंड एक्सटेंशन रहेगा। अब 31 में 2026 में जाके ये रिटायर होंगे इस पोजीशन से। एंड ये करंटली क्या है, सेक्रेटरी हैं ऑफ द न्यू दिल्ली बेस्ड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड चेयरमैन ऑफ DRDO। फिर आ जाते हैं सिटी ग्रुप, ये न्यूयॉर्क यूएसए बेस्ड आपका एक लीडिंग मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन है। इन्होंने अपॉइंट किया प्रशांत ठक्कर को एज द हेड ऑफ द कॉर्पोरेट बैंक फॉर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर इसके बाद आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। इंटेलीसेट, ये यूएसए की कंपनी है, एक मल्टीनेशनल सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर है। इन्होंने इनस्पेस के साथ यहाँ पर अभी टाई अप करा एंड इनको रिसीव हुआ इनस्पेस का अप्रूवल कि ये डायरेक्ट सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं इंडिया में डायरेक्टली। एंड जो मीडिया हाउसेज हैं बड़े, जो ब्रॉडकास्टिंग यूनिट्स होती हैं, उन तक ये डाटा यहाँ पे डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट किया जाएगा थ्रू दीज सैटेलाइट, राइट। आई रिपीट, ये जो सैटेलाइट से जो डाटा आएगा ना, प्राइमरली आपके जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है उसमें दिया जाएगा एंड मीडिया इंडस्ट्रीज को, मीडिया प्लेयर्स को यहाँ पे डाटा सीधा दिया जाएगा थ्रू दी सैटेलाइट, ताकि वह फर्दर ब्रॉडकास्ट कर सके। करेक्ट। अगर इंटेलीसेट की मैं बात करूं, हेडक्वार्टर कहां पर है? वर्जीनिया यूएसए में। एंड इन स्पेस का हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा? अहमदाबाद गुजरात में। इन स्पेस के चेयरमैन कौन रहेंगे? पवन कुमार गोयनका। नेक्स्ट आ जाते हैं एनवायरमेंट के ऊपर। न्यू केव अडेप्टेड फिश स्पीसीज सिचुस्ट्रा डेनिस्क्लावा, ये डिस्कवर की गई कहां पर? मेघालय में। ये केव ड्वेलिंग फिश रहेगी, याद रखेंगे, केव में ये फिश की स्पीशीज डिस्कवर की गई है। फिर आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। इंडिया ने टॉप किया मेडल टैली में एट द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025, जो कि सुहुल में हुआ। एंड इंडिया ने मेडल टैली में टॉप पोजीशन सिक्योर करी विद 11 मेडल्स। इसमें अगर देखें 3 गोल्ड, 4 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज रहेंगे। इंडिया फर्स्ट, सेकंड चाइना एंड थर्ड इटली रहेगा। यहीं पे तेजस्विनी सावंत, राइट, इन्होंने वीमेंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड सिक्योर किया। एंड कनक बुधवारा जी ने भी गोल्ड मेडल सिक्योर किया इन वीमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल। फिर आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पे। टेस्ट क्रिकेट आ हिस्ट्री, ये बुक ऑथर की गई, जिसमें 150 साल यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट के जो एनिवर्सरी थी उसको सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पे उसके कल्चर को कैसे खेला गया, क्या इंटरव्यूज़ हुए, क्या इसका सोशल इम्पैक्ट है, क्या इसका वाइडर इम्पैक्ट है ग्लोबली, राइट, वो बताया गया है इस बुक में। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंपॉर्टेंट डेज पे। वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। जो लाखों लोग पूरी दुनिया में, राइट, हंगर से परेशान है, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी एक थीम याद रखेंगे, सोइंग रेजिलियंस, ये यहाँ पे थीम रहेगी इसकी वर्ल्ड हंगर डे की। पहली बार इस डे को 2011 में ऑब्जर्व किया गया था। इसके बाद आ जाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वीमेंस हेल्थ। 28 मई को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, ये ताकि जो आपकी वीमेन की हेल्थ है, राइट, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए। इसकी एक थीम भी याद रखेंगे, इन सॉलिडेरिटी वी रेजिस्ट, आर फाइट आर राइट, ये इसकी थीम रहेगी।
देन आ जाते हैं वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, 28 मई को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है वीमेंस हाइजीन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड पीरियड्स के टाइम पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, राइट, स्टिग्मा फ्री इन्वायरमेंट्स बनाने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी भी एक थीम है जो आपको याद रखनी है, टुगेदर फॉर अ हैशटैग पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड। आई रिपीट, टुगेदर फॉर अ हैशटैग पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, ये यहाँ पे थीम रहेगी। देन आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर स्टूडेंट्स। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने रीनेम किया वाईएसआर डिस्ट्रिक्ट को क्या, एज द वाईएसआर कडप्पा डिस्ट्रिक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि वाईएसआर डिस्ट्रिक्ट को रीनेम करके क्या कर दिया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा, तो वाईएसआर कडप्पा डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन पार्ट पर जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अभी इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट एट द एज ऑफ 38 विद इमीडिएट इफेक्ट, राइट। इन्होंने ये कहा जा रहा है कि 18 तो 50s मारी है यहाँ पे, मतलब हाफ सेंचुरी एंड 12 फुल सेंचुरी, मतलब 100 रन यहाँ बनाए। इनको 2015 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था एंड 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से। नेक्स्ट, किस ऑटोनोमस बॉडी ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रिवाइव किया एंशिएंट आयुर्वेदिक मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि है द्रव्यकर्त्रकरा निगंथु एंड द्रव्यमकारा निगंथु, राइट। तो ये किस ऑटोनोमस बॉडी ने अभी एंशिएंट आयुर्वेदिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रिवाइव करा, तो ये रहेगी आपकी सेंटर काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया MRSAM जो कि है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इंडिया इकोसिस्टम समिट 2.0 को इन कोलैबोरेशन विद एरोस्पेस सर्विस इंडिया एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ऑन 7 मई इन दिल्ली। तो वो है सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज। नेक्स्ट आ जाते हैं, द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज कम्स अंडर किस मिनिस्ट्री के, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, तो ये आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। नेक्स्ट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग द ऑप्शन बाय इंडियन आर्म फोर्सेज ऑन 7 मई इन रिस्पॉन्स टू टेरर अटैक जो कि पहलगाम में हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, जिसके अगेंस्ट में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। तो ऑप्शन ए एंड बी सही है, सी गलत है। क्यों? क्योंकि सी कह रहा है कि इंडिया ने इसके अंदर 10 टेररिस्ट लिंक लोकेशंस को पाकिस्तान एंड पीओके जम्मू एंड कश्मीर में अटैक किया। तो नहीं, 10 लोकेशन नहीं थी, 9 लोकेशंस में यहाँ पे अटैक करते हुए दिखे थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द न्यू सीलिंग ऑन द गारंटी कवर पर बोरोवर अंडर द एक्सपेंडेड क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स एज नोटिफाइड बाय DPIIT इन May। तो व्हाट इज द न्यू सीलिंग ऑन द गारंटी कवर पर बोरोवर अंडर द एक्सपेंडेड क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द स्टार्टअप्स, तो जो नई लिमिट आई है वो कितनी आई है, 20 करोड़ रुपए की। न्यू सीलिंग क्या आई है, वो है 20 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट, मेंशन द कंपनी इन इंडिया जिन्होंने रिसेंटली बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर टू टर्न वाटर पॉजिटिव विद अ 14 गीगावाट ऑपरेशनल पोर्टफोलियो। तो ये अडानी कंपनी है। ये वाटर पॉजिटिव मतलब जितना पानी इन्होंने यूज़ किया अपने ऑपरेशंस के बाद, उसके बाद जो वाटर रिलीज हुआ वो क्लीन वाटर था, सस्टेनेबली उसको यूज़ किया गया एंड उसको पॉजिटिवली जितना यूज़ किया उससे ज़्यादा ही इन्वायरमेंट में इन्होंने वाटर को रिलीज़ किया। तो यह है अडानी पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। नेक्स्ट है, इन अप्रैल द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट है लोकेटेड इन साउदर्न फ्रांस, इन्होंने एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया बाय डेवलपिंग देयर मेन मैग्नेट सिस्टम विद इंडिया, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द कंट्री फ्रॉम द लिस्ट जो इन्वॉल्व नहीं है इस ITER प्रोजेक्ट में जो कि है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। तो इनमें से देखिए फ्रांस वो कंट्री नहीं है जो कि इसका पार्ट नहीं है, बाकी सारे इसका पार्ट रहेंगे। नेक्स्ट, कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट, इनको इलेक्ट किया गया 267th पॉप ऑफ द कैथोलिक चर्च आफ्टर द डेथ ऑफ पॉप फ्रांसिस। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। पूछा जा रहा है जो नए पॉप बने ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये USA से बिलोंग करते हैं एंड ये पहले इंडिविजुअल है फ्रॉम USA जो कि पॉप बने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच इंडियन डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इन्होंने डिलीवर्ड किया INS अरनाला को जो कि वन ऑफ द फर्स्ट 8 इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। इंडियन नेवी को ये डिलीवर किया गया कटुपली तमिलनाडु में। तो किसके द्वारा इसको बनाया गया था ये पूछा गया है, तो ये है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु लेड द इंडियन डेलीगेशन एट द 20th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट हेल्ड इन May इन न्यूयॉर्क USA। तो वो है सुशील कुमार अवस्थी। नेक्स्ट, which of the following social security schemes completed 10 years since their launch in May having been introduced by Prime Minister Narendra Modi?
तो तीनों ये वो स्कीम रहेंगी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। फिर आ जाते हैं, अभी एक स्टडी प्रिपेयर की गई बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन लद्दाख इन कोलैबोरेशन विद डैश एंड द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कंक्लूडेड दैट लद्दाख के में सबसे ज़्यादा हमें हाईएस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलती है स्नो लेपर्ड की, राइट। तो ये किसके द्वारा रिलीज की गई रिपोर्ट, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनके साथ मिलकर। नेक्स्ट, किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड का पहला नेशनल क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम मई में, दैट कोलैबोरेटेड विद बाइनेंस पे एंड डीके बैंक। ये डीके बैंक भूटान का पहला डिजिटल बैंक है। तो इन्होंने भूटान गवर्नमेंट ने बाइनेंस पे के साथ एंड डीके बैंक के साथ पार्टनर किया ताकि टूरिज्म में क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस किया जा सके, ताकि टूरिज्म बढ़ सके भूटान में। नेक्स्ट आ जाते हैं, आफ्टर नेट्राडिन एंड जस्पे कौन सी कंपनी थर्ड यूनिकॉर्न बन गई है इंडिया की आफ्टर रेजिंग $200 मिलियन इन सीरीज एफ फंडिंग राउंड। तो वो है पोर्टर। पोर्टर क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह को गुड्स ले जाती है, राइट। जैसे आपका ऊबर हो गए, ओला हो गए फॉर ह्यूमंस के लिए कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, सिमिलरली गुड्स के लिए, राइट, को आपको सामान भेजना है तो उसके लिए पोर्टर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनमें गवर्नमेंट ऑफ डैश एंड इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन्होंने एमओयू साइन किए 2 जो फोकस करेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे फॉर स्पेस टेक्नोलॉजीज एंड एक पब्लिक प्राइवेट स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क यहाँ पे सेटअप किया जाएगा। तो पूछा जा रहा है द गवर्नमेंट ऑफ कौन सी, द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड इन स्पेस के द्वारा ये 2 एमओयू साइन किए गए। नेक्स्ट, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन एसएमबीसी ये एंटर करते हैं इनटू अ डेफिनेटिव एग्रीमेंट टू बाय हाउ मच परसेंट स्टेक इन येस बैंक लिमिटेड वैल्यूड एट 13,483 करोड़ रुपीस। तो 20% स्टेक यहाँ बाय करने की बात की गई। फिर आ जाते हैं विराट कोहली, राइट, इन्होंने अनाउंस कर दिया अपनी रिटायरमेंट टेस्ट क्रिकेट से। पूछा जा रहा है व्हाट इज द टेस्ट विन परसेंटेज अंडर कोहलीज कैप्टेंसी। तो 58.82% टाइम जब कोहली कैप्टन बने तो हमने यहाँ पर मैच जीता। नेक्स्ट, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये ग्लोबल कैंपेन है सपोर्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस। इसको ऑब्जर्व किया जाता है बाइनली ऑन द सेकेंड सैटरडे ऑफ मे मंथ एंड अक्टूबर मंथ। इस बार मे मंथ में देखें तो 10 मई को एंड अक्टूबर को देखें तो 11 अक्टूबर को ये ऑब्जर्व किया जाएगा। साल में 2 बार इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व किया जाता है बाय टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। 11 मई को इसको ऑब्जर्व करते हैं हर साल। ये मार्क करता है द हिस्टोरिक अचीवमेंट ऑफ 11th ऑफ मई 1998 जब इंडिया ने पोखरान 2 टेस्ट किया था जो कि ऑपरेशन शक्ति था, न्यूक्लियर टेस्ट था एंड ऑल्सो हंसा 3 एयरक्राफ्ट को यहाँ पे टेस्ट किया गया था। तो इनको ऑनर करने के लिए हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को ऑब्जर्व करते हैं एंड इस बार हमने 27वां एडिशन इसका ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, विच इज द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो तीसरी हाईएस्ट पीक वर्ल्ड में कौन सी है, वो है कंचनजुंगा। नेक्स्ट, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को मई 2025 में टू स्ट्रेंथन इंडियाज एफर्ट्स टू बिकम सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन। तो वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह वर्चुअली इनॉग्रेटेड दिस ब्रह्मोस। तो कहाँ पे इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया इसको, लखनऊ यूपी में इनॉग्रेट किया, राइट। एंड ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, करेक्ट, एंड डीआरडीओ की मदद से इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। नेक्स्ट है, किन्होंने टॉप किया अमंग द डेवलप्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज इन टर्म्स ऑफ बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज एक्टिविटी एज पर द डाटा और लेटेस्ट डाटा ऑफ पीएमआई जो कि है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज्ड बाय जेपी मॉर्गन। तो हमारी कंट्री इंडिया ने यहाँ पे टॉप किया अमंग द डेवलप्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज में। नेक्स्ट, mention the name of the bank becoming the first from the Middle East and African region to open their branch in GIFT IFSC। तो वो कौन सा बैंक है, वो है कतर नेशनल बैंक ग्रुप। नेक्स्ट, वाटर हेरिटेज म्यूजियम, ये कहाँ पर है पूछा जा रहा है। इनको अभी रिसेंटली ग्लोबल नेटवर्क ऑफ वाटर म्यूजियम जो कि एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम का, उसमें ऐड किया गया एंड ये तीसरा जगह है जिसको अभी ऐड किया गया है। ये पूछा जा रहा है लोकेटेड कहाँ पर है वाटर हेरिटेज म्यूजियम, तो कोझिकोडे केरला में ये लोकेटेड रहेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जल वाटर म्यूजियम एंड लिविंग वाटर म्यूजियम, इन दोनों को भी ऐड किया गया था। जल वाटर म्यूजियम उदयपुर में है एंड लिविंग वाटर म्यूजियम ये आपका पुणे में है। नेक्स्ट, डैश एंड डैश वन द रिस्पेक्टिव मेंस एंड वीमेंस 2025 एशियन ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप जो कि अल इन यूएई में देखने को मिला। तो आइवन जेमलेंस्की एंड अलुआ नुरमन, इन दोनों ने मेंस एंड वीमेंस कैटेगरी में रिस्पेक्टिवली एशियन ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप को जीता जो कि यूएई में हुआ था।
नेक्स्ट आ जाते हैं सुबन्ना अयप्पन, जो कि एक रिनोन इंडियन एक्वाकल्चर साइंटिस्ट हैं एंड पहले नॉन क्रॉप स्पेशलिस्ट हैं। टू लीड विच ऑर्गेनाइजेशन, इनका रिसेंटली निधन हो गया। तो ये ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को इन्होंने लीड किया था, जिनका भी रिसेंटली निधन होता हुआ मैं देखा। 2022 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज पार्टनर्ड विद लंका पे टू एनहेंस श्रीलंकाज डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग को ब्रांडेड डेबिट कार्ड एंड AI पावर्ड फ्रॉड डिटेक्शन। तो मास्टर कार्ड के साथ इन्होंने यहाँ पे भी लंका पे के साथ पार्टनर होते हुए दिखे। नेक्स्ट, उस गेम का नाम बताओ दैट वाज ऑफिशियली सस्पेंडेड बाय तालिबान इन मे ड्यू टू द कंसर्न्स ओवर गैम्बलिंग एंड रिलीजियस अलाइनमेंट्स विद इस्लामिक प्रिंसिपल्स। तो ये रहेगा चेस गेम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अमंग द टॉप 5 इंडियन स्टेट विद द हाईएस्ट GST कलेक्शन फॉर FY25। तो इसमें से देखें तो वो वेस्ट बंगाल नहीं है। अगर हम डाटा देखें तो महाराष्ट्र फर्स्ट पर आ जाता है, कर्नाटका सेकंड पे आ जाता है, गुजरात थर्ड पर आ जाता है, तमिलनाडु फोर्थ पे आ जाता है एंड यूपी हमारा फिफ्थ पे आता है। नेक्स्ट, उस पहली इंडियन सिटी का नाम बताओ जिसको डिक्लेयर किया गया बेगर फ्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया। तो ये है इंदौर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फर्स्ट अमेरिकन यूनिवर्सिटी जिन्होंने अप्रूव किया इंडियन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, जो इंडिया की UGC को, इन May 25 टू इस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट डिग्री ग्रांटिंग कैंपस इन मुंबई महाराष्ट्र। तो वो पहली अमेरिकन यूनिवर्सिटी है जो कि मुंबई महाराष्ट्र में अपना एक कैंपस ओपन करेगी। तो वो है इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 2026 में ये कैंपस स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, जो कि है ग्रेड रिपोर्ट 2025 की, रिलीज की गई इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के द्वारा एंड नॉर्वेनियन रिफ्यूजी काउंसिल के द्वारा मई महीने में। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट रिपोर्टेड इन इंडिया इन 2024। तो 5.4 मिलियन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे रिपोर्ट होती हुई हमें दिखी विद इन इंडिया। अगर हम बात करें बाहर की कंट्रीज में से, तो वर्ल्ड में तो सूडान ने टॉप किया यहाँ पे विद 11.6 मिलियन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ द वॉर जो वहाँ पर चल रही है, सोशल कन्फ्लिक्ट्स जो वहाँ पे चल रहे हैं। नेक्स्ट, मेंशन द पब्लिक सेक्टर बैंक दैट बिकेम द वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज इन FY25 विद अ नेट प्रॉफिट ऑफ $9.2 बिलियन। तो वो कौन सी पब्लिक सेक्टर बैंक है? वो है SBI। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, इन में विच B2B बिजनेस टू बिजनेस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन्होंने सिक्योर किया अप्रॉक्सीमेटली $40 मिलियन का फंडिंग राउंड, अचीविंग अ वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन एंड एंटरिंग इंडियन यूनिकॉर्न क्लब। तो वो है JSW1 प्लेटफॉर्म लिमिटेड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो पर्सन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स टू स्ट्रेंथन द टाइज अमंग द ब्रिक्स नेशन। तो हरवंश P चावला जी, इनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन है। ये एक रिनोन्ड सीनियर कॉर्पोरेट लीगल एक्सपर्ट है। नेक्स्ट, संतोष कुमार सारंगी, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सक्सीडिंग रामेश्वर प्रसाद गुप्ता। देन नेक्स्ट आ जाते हैं किनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब ऑफ लंदन लंदन इंग्लैंड, जो सक्सीड करेंगे लॉर्ड किंग ऑफ लॉथबरी। तो वो है एडवर्ड थॉमस स्मिथ। नेक्स्ट, every year when is the global road safety week organized by World Health Organization to raise awareness about the road safety and advocate for measures to reduce road traffic deaths and injuries। तो वो है 12 से 18 मई। नेक्स्ट, ऑन 13th ऑफ मई इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन था बेस्ड ऑन द CPI फेल टू कितना गिर गया 3.16% पे इन अप्रैल। ये NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया जाता है। फिर आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डाटा रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इन मे, 12 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड अ 4.3% इंक्रीज इन कार्गो हैंडलिंग फ्रॉम 819 मिलियन टन इन FY24 अप्रॉक्सीमेटली टू कितना टन 855 मिलियन मेट्रिक टन। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन कैबिनेट, इन्होंने अप्रूव किया एक जॉइंट वेंचर जो कि इंडियन कंपनी एंड ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हॉन हाई प्रिसीजन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि फॉक्सकॉन है उनके साथ है। ये सेटअप करेंगे पहला सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग नियर जेवर एयरपोर्ट इन यूपी। तो इंडिया से वो कौन सी कंपनी है? वो है HCL ग्रुप एंड इन्होंने पार्टनर किया फॉक्सकॉन के साथ, राइट, ताकि पहला सेमीकंडक्टर चिप यूनिट सेटअप किया जा सके जेवर यूपी में। एंड ये छठा सेमीकंडक्टर यूनिट है अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट विद 76,000 करोड़ रुपीस फॉर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। नेक्स्ट आ जाते हैं इन मई 2025 वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने डेडिकेट किया इंडिया का पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पब्लिक फंडेड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ICGEB बायो फाउंड्री ड्यूरिंग द 31st बोर्ड मीटिंग ऑफ द गवर्नर्स।
तो न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंडियाज फर्स्ट मैन डीप ओशन मिशन समुद्रयान विल बी लॉन्च्ड बाय 2026 एज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इन मे। ये जो मिशन है इट विल यूज द मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल मत्स्य। 6000 इसका नाम है, तो आप इससे लगा सकते हैं 6000 मीटर की डेप्थ पे जाएगा, 3 साइंटिस्ट के साथ जाएगा एंड यहाँ पे वो वेरियस टेस्ट करेगा, राइट। नेक्स्ट मेंशन द नेम ऑफ द स्पेशलाइज्ड सूट ऑफ करंट एंड सेविंग अकाउंट, जो कि कैनरा बैंक के द्वारा भी लॉन्च किया गया था, राइट, टू कैटर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो है कैनरा ट्रू एज। टू द होमवर्क सेक्शन स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज, वेयर इज इट लोकेटेड। सेकेंड क्वेश्चन, टेल मी recently if I ask you who has been appointed as the new chief executive officer of UIDAI and who he will be replacing. Third question, who has been appointed as the new chief executive officer of ITI fund manager or for ITI mutual fund. Fourth question, tell me recently who was honored with the US Presidential Medal of Freedom. I repeat, who was honored with the US Presidential Medal of Freedom. And fifth question, tell me recently SpaceX, this is the mission of which country? What is this mission? Tell me that in detail. So these are your 5 homework questions students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. And students, all those students who haven't subscribed to us, do subscribe right now.